Yo, welcome to Physics with Vinay. I am Anupal and I'm excited to announce the launch of Droppers Batch 1 for JEE 2027. It's an early Droppers Batch for JEE 2027 and इस वीडियो में I'm going to explain all the details about the course, किस तरीके से course flow होगा, कैसे lectures structured होंगे, कैसे तुम्हारे doubts clear होंगे and everything else. So before I do that, the first thing that I want to address is, should you take a drop? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेई मेंस जैन अटेम्प्ट 2026 दिया है एंड फॉर वेरियस रीजंस दे आर इन दे मे बी इन अ प्लेस जहाँ पे वो सोच रहे हैं अबाउट टेकिंग अ ड्रॉप फॉर 2027. सो लेट मी जस्ट क्विकली एड्रेस दैट बिफोर आई गो ऑन टू द डिटेल्स ऑफ दिस ड्रॉपर्स बैच कोर्स. नाउ students who have not done up to their expectations, who have not performed up to their expectations in JEE mains Jan attempt 2026, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. एक तो हो सकता है कि तुमने बहुत मेहनत करी एंड बहुत पढ़ाई करी, बट ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम मे बी द एग्ज़ाम प्रेशर गॉट टू यू, मे बी यू डिड सिली मिस्टेक्स. शायद सेंटर किसी बहुत दूर जगह पे था, तुम्हारे नींद नहीं हुई. देयर कुड बी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड मे बी इट वाज जस्ट एन ऑफ डे फॉर यू. ये एक चीज़ हो सकता है फॉर योर लोअर जे मेन्स परसेंटाइल दैन व्हाट यू शुड हैव गॉट. दूसरी चीज़ हो सकती है, and majority of the students will probably be in this category who are thinking about taking a drop, is that they did not study as much as they could have. They did not work hard or they did not give it their best shot. उनके बेस्ट एफर्ट्स नहीं दिए इन 2 सालों में. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्ली इस कैटेगरी में है. एंड इवन दो दे हैव द पोटेंशियल टू डू वेल, दे नो दे हैव द पोटेंशियल टू डू वेल, they did not do justice to themselves. They did not study hard enough and therefore could not perform obviously to their potential in JEE mains Jan attempt. So you have to decide for yourself and you have to speak to your parents as well. I would suggest कि एक बार parents से भी बात कर लेना कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, बिकॉज ड्रॉपर स्टूडेंट्स जो है दे कैन बी वेरी सक्सेसफुल. इनफैक्ट आई हैव हैड अ लॉट ऑफ ड्रॉपर स्टूडेंट्स इन द पास्ट few years who have been in my courses and who have worked hard and who have performed very well, not only in JEE mains but also in JEE advanced. इनफैक्ट इसी JEE mains जैन अटेम्प्ट में भी मेरे ड्रॉपर्स है जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, 99 परसेंटाइल वगैरह प्लस लेकर आए हैं. And I expect they're going to do really well in JEE Advanced. But the key is that you have to ensure, or you have to ask yourself, can you ensure you're not going to make the same mistakes that you did in the last 2 years? Can you study consistently on a daily basis? Drop year is a year where you have to study on a daily basis consistently. कंसिस्टेंसी इज की. मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन 16 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ाई किया, ऐसा नहीं. Probably 11 to 12 hours every day you should be ready to put in. And अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वो डिसिप्लिन नहीं है to do this on a daily basis, then probably drop year is not for you. But if you think you can study hard for 1 year, एक साल की बात है, if you can study hard for 1 year, then definitely my course will take you to your full potential in JEE Advanced Physics. But consistency is key. Okay? क्योंकि ये जो 2 साल चले गए हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा ही हुआ होगा कि उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर लिया, या मतलब उतनी पढ़ाई नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी. And therefore they were not able to reach their potential, and they will feel that if they should not let go of this chance that they have to utilize the drop year and ensure that they reach their full potential जहाँ पे भी है. So if you think that you can study hard enough मतलब यार 11-12 घंटे पढ़ना है, इतना तो expected है dropper year में, and you obviously know hard work is required. If you think you can do that, if you think you can stay away from social media, if you think you can put in the effort, then definitely you should go for the drop year. Because long term में 1 extra year of studies doesn't really matter. मतलब 10 साल बाद कोई तुम्हें पूछने नहीं वाला है कि ड्रॉप ईयर लिया कि नहीं लिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. If the drop year ensures you get into a good college and a good branch, then definitely it's worth it. Okay, but you have to ask yourself, will you be able to put in the effort consistently on a daily basis? And
also discuss it with your parents. Okay, now if you're sure that you're going to take a drop for 2027, then this is a batch that I'm going to introduce to you. So let's talk about this batch. I'm here on my website vinayuppal.com. तो if you're new here, तुम खुद ही चेकआउट कर सकते हो मेरा वेबसाइट. यहाँ पे मेरे क्वालिफिकेशंस है, टॉपर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ वगैरह है, टेस्टिमोनियल्स है. लेट मी कम टू द ड्रॉपर्स बैच. तो ड्रॉपर्स बैच में ये बैच है जो लॉन्च किया है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ ऑन March 18th, the coming Wednesday basically. Okay, so if you just click on view course, you will be taken to the course page. यहाँ पे तुमको right hand side पे तुम्हें दिखेगा start a free trial. तो वो click कर सकते हो. You will be able to watch the free lecture as well to get an idea. तो ये मेरा course page है for droppers batch 2027 batch 1. तो इसमें एक welcome message है जो तुम पढ़ सकते हो. Then तो ये जो चैप्टर्स है राइट हैंड साइड पे देखना ज़रा. कैलकुलस है, वेक्टर्स है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस है. तो ये 3 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं. ठीक है. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद काइनेमैटिक्स ऑन वेडनेसडे. नाउ calculus, vectors and units dimensions are very basic chapters that you can just quickly use it to revise or brush up if you want immediately after enrolling. एंड हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स से प्रॉपरली. इसमें द प्री रिक्विजिट्स क्या है. बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इस ड्रॉपर्स बैच में व्हाट आर दे एक्सपेक्टेड टू नो. नथिंग. दे आर ओनली एक्सपेक्टेड टू नो द बेसिक कैलकुलस, वेक्टर्स एंड बेसिक यूनिट्स एंड डायमेंशंस. ओके, एकदम बेसिक लेवल पर. मतलब कैलकुलस में ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल ये सब आना चाहिए. वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा ही. डॉट प्रोडक्ट बेसिक कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं और वो सब भी नहीं. अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो क्विकली यू कैन यूज माय लेक्चर्स टू रिवाइज. ओके, बाकी फिजिक्स पूरा मैं जीरो से शुरू करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू जेईई एडवांस्ड लेवल. सो लेट मी जस्ट सी ये काइनेमैटिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा. सो हर चैप्टर में मॉड्यूल, जो मेरा खुद का मॉड्यूल है वो स्टार्टिंग में अपलोड हो जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर अलॉन्ग विद फुल वीडियो सॉल्यूशंस. लेट मी जस्ट गो टू द 2026 बैच, क्योंकि मैंने 2027 बैच में तो अभी अपलोड होने वाला है. 2026 बैच में पूरा अपलोड हो चुका है. सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू देयर. तो ये मेरा काइनेमैटिक्स का चैप्टर है. तो जैसे काइनेमैटिक्स का मॉड्यूल है. ओके, सो काइनेमैटिक्स में मॉड्यूल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, अलग अलग एक्सरसाइजेस है डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेट, वन और मोर देन वन करेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, सब्जेक्टिव वगैरह. सर ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. हर क्वेश्चन का मैंने वीडियो सोल्यूशन बनाया है. ओके, सो ये एट द टॉप ऑफ द चैप्टर अपलोड हो जाएंगे एंड देन वी विल हैव लाइक हियर इट्स लेक्चर 1. सो आई जनरली डिवाइड द लेक्चर इनटू 2 or 3 पार्ट्स जस्ट फॉर ईज ऑफ व्यूइंग फॉर द स्टूडेंट एंड दिस लेक्चर ऑन एन एवरेज विल बी 1 hour ईच. ठीक है, ऑन एन एवरेज, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है. सो लेक्चर देखना है तुम्हें and homework solve करना है. So homework में भी मैं I will give it to you from a module and later on I'll also start giving it to you from Irodov and SBT. SBT is a very nice book, problem solving book जो है SBT का. The author, it stands for the author's name Shashi Bhushan Tiwari. So it has very nice set of questions at the JEE advanced level. So हर लेक्चर के बाद तुम्हें होमवर्क सॉल्व करना है. लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया, you can ask a doubt. I'll show you how the doubt discussion is done. होमवर्क मैंने कुछ नहीं समझ में आया, सोल्यूशन देखो मेरा, उसमें भी कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क अ डाउट. यू कैन आस्क अ डाउट एनी टाइम इन एनी वीडियो, एनी होमवर्क, एनी टेस्ट, एनी लेक्चर, कुछ भी. ठीक है. एंड एनी टाइम मतलब क्या कि अगर तुम 2 महीने बाद काइनेमैटिक्स रिवाइज कर रहे हो तो उसमें भी तुम डाउट पूछ सकते हो. ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी पॉसिबल एंड यू शुड रिवाइज द चैप्टर्स एंड ऑफ कोर्स यू कैन हैव डाउट्स. सो यू कैन आस्क अ डाउट इन एनी लेक्चर एनी टाइम एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. 100% डाउट क्लियर. अगर तुम्हें कोई सीनियर्स पता है तुम्हें who have been enrolled in my course, they will confirm this statement that I'm making, that I clear 100% doubts. क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट्स को बिलीव नहीं होता है कि स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कैसे 100% डाउट्स क्लियर करेंगे, या इवन ऑफलाइन में 100% डाउट क्लियरेंस इज वेरी डिफिकल्ट unless you're in like in a very top batch, but here on my platform I clear 100% doubts. Okay, so ऐसे करेंगे. कोर्स स्ट्रक्चर कैसे होगा? You watch the lecture, ask your doubts, solve the homework, ask your doubts, and then you go on to the next lecture. ऐसे करते करते we will reach the end of the chapter, and end of the chapter में you will have a test. So ये जो टेस्ट है
उसके बाद उसके भी वीडियो सोल्यूशंस बना के रखे हैं मैंने, और उसके भी वीडियो सोल्यूशंस मैं अपलोड करूँगा। सो ये जो टेस्ट है वो तुम्हें देना है, यू कैन इस पूरा एनालिसिस वगैरह भी मिल जाएगा ना, इट विल टेल यू कि वेयर यू आर एट इन दैट चैप्टर, ऑलराइट। एंड देन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, एंड वैसे ही नेक्स्ट चैप्टर में भी अभी जैसे न्यूटन्स लॉज है उसका मॉड्यूल अपलोड होगा स्टार्टिंग में, देन द वीडियो सॉल्यूशंस विल आई विल अपलोड इट, एंड देन विल स्टार्ट। एंड फिर हर लेक्चर के बाद मैं होमवर्क दूंगा फ्रॉम द मॉड्यूल, स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल, और फ्रॉम later on I'll start adding SBT वगैरह भी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे शशि भूषण तिवारी का भी होमवर्क वगैरह ऐड कर दूंगा, इरोडो का भी करूँगा बाद में, ओके। सो ये जो शशि भूषण तिवारी है, SBT बुक है या इरोडो बुक है, उसके भी मैं वीडियो सॉल्यूशंस बना के डालूंगा। क्यों? बिकॉज शशि भूषण तिवारी द SBT book is actually a solved book. It has solutions, but in this droppers batch I give video solutions because I'm going to teach you very unique methods, very unique time-saving shortcuts, very elegant methods, very cute methods in order to solve JEE advanced level problems in a very fast manner. You will see in the course. तो वही methods use करके I will solve the SBT, my homework problems also. तो you will often find that even when you're solving the homework, you will find that using my methods, you'll be able to solve them much faster than the standard solution given in the book. Okay, so use the SBT book for a good source of problems, but the solutions will be our solution. Okay, okay, तो यहाँ पर ऐसा इस तरीके से चलेगा। मैं डाउट क्लियरिंग कैसे करता बताता हूँ। Okay. सो ऐसे कर करके हर चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे ना। कितने कितने लेक्चर्स होंगे पर वीक? मंडे टू फ्राइडे 5 लेक्चर्स होंगे। ऑन एन एवरेज द लेक्चर विल बी अराउंड 1 आवर। नाउ 1 घंटे लेक्चर देखने में तुम्हें शायद 2 घंटे लग जाएंगे। इन माई एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स जनरली टेक डबल द टाइम। द रीजन इज दैट often I'll ask you to pause the video and solve a question on your own. Try to solve the question on your own, or you may yourself pause the video and try to understand some concept, try to think about it. ये सब पूरा मिला के 2 घंटे हो जाएंगे. Okay, that's normal. So every lecture will require 2 hours, and maybe the homework will require 1 to 1.5 hours. तो 1.5 hours मान लो, तो around 3.5 hours, maybe 4 घंटे मान लो per lecture. Okay, and कितने lectures होंगे हफ्ते के? 5. तो total हफ्ते के कितने घंटे are required from your end for this course? 20. ठीक है, तो around approximately maybe 18 to 20, maybe 18 to 20 hours I would say कि are required to for your end, from your end, to invest in this course. Now as a dropper, when I say 20 hours, मतलब it includes the lecture, watching the lecture also. So as a dropper you should aim for 11 to 12 hours per day, इंक्लूडिंग वॉचिंग द लेक्चर्स। मतलब अगर तुम कोई कोचिंग वगैरह जाते हो तो 4 घंटा 6 घंटा लेक्चर देखते हो, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। फिर बाकी 5-6 घंटा सेल्फ स्टडी वगैरह। ओके, सो इन माई व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 20 आवर्स, आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग द वॉचिंग द लेक्चर्स टाइम। सो पर वीक मुझे 20 आवर्स चाहिए, एंड दैट शुड बी वेरी डूएबल एज अ ड्रॉपर, बिकॉज ड्रॉपर्स के लिए 11-12 घंटे यू शुड डिवोट पर डे, एंड हफ्ते में 7 दिन है, सो अराउंड 77 आवर्स बोल दो पर वीक। तो अराउंड 25-26 आवर्स तो पर सब्जेक्ट इट इज़ अवेलेबल। ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड कि कितना टाइम तुम किस सब्जेक्ट को दोगे, वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। बट आई हैव केप्ट दिस ड्रॉपर्स बैच इन अ वे दैट यू विल प्रॉब्ली रिक्वायर अराउंड 20 आवर्स पर वीक, विच यू शुड बी एबल टू गिव। ठीक है, ओके। सो ऐसे करके मंडे टू फ्राइडे हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे। होमवर्क सॉल्व करो, डाउट्स पूछो, एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट ऑन अ डेली बेसिस। फिर सिलेबस कब खत्म होगा? जनरली अक्टूबर में वी आर गोइंग टू एम फॉर अक्टूबर, मे बी अक्टूबर एंड द सिलेबस विल गेट ओवर, एंड उसके बाद you will be enrolled in the crash course. Now crash course is a very popular course which has been used by a lot of students over the last few years to crack JEE advanced and with very good ranks in fact. तो ये जो crash course है that is included for free in my droppers batch, alright. तो crash course is included for free and you will get enrolled automatically in the crash course after the syllabus is over here. Then वहाँ पे भी अलग homework दिया है, वहाँ पे भी video solutions बनाए हैं. So you will be able to quickly revise all these chapters using the crash course. What about JEE mains? यार अगर तुमने मेरा course consistently किया, you will be operating at a level that is at JEE advanced level. तुम्हें JEE mains के questions बहुत easy लगेंगे. So most students who have done well, droppers batch के, who have done well in my JEE in JEE mains, जैसे अभी 2026 में Jan pass
जैन अटेम्प्ट में जिन्होंने 99 इवन 99.5 99.9 परसेंटाइल प्लस वगैरह भी लेकर आए हैं मेरे ड्रॉपर स्टूडेंट्स. सो those of the students who have done well have actually just followed my course, and then syllabus होने के बाद they have solved JEE Mains PYQs as mocks or maybe just given a few JEE Mains mocks and they have found it very easy. एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत स्टूडेंट्स एंड बहुत न्यू स्टूडेंट्स एंड न्यू पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि दो स्टूडेंट्स whose ultimate aim is still JEE Mains and not JEE Advanced, they think that they should only study at JEE Mains level. But the real truth is the ones who do well in JEE Mains are the ones who are actually studying for JEE Advanced. And the reason is very obvious कि जब तुम JEE Advanced लेवल पे पढ़ रहे हो पूरा टाइम तुम्हारा माइंडसेट भी उसी लेवल का है. You will find those questions as normal. And then when you go to attempt JEE Mains, they will be extremely easy. But जब तुम सिर्फ JEE Mains लेवल का पढ़ रहे हो, थोड़ा भी JEE Mains के एग्जाम में थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा आ गया तो तुम अटक जाओ. एंड ऐसा हुआ, मतलब JEE 2026 अटेम्प्ट में थोड़ा सा फिजिक्स डिफिकल्ट आया था एक आध शिफ्ट में, तो उसमें लोग अटक गए थे बिकॉज दे आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग अबव द एवरेज JEE Mains लेवल. एंड दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच व्हेन यू हैव लॉट ऑफ टाइम. Maybe when you have only 1 or 2 months, then of course you should, you have no option but to focus on JEE Mains. But जब तुम्हारे पास पूरा एक साल है, you should definitely study at the JEE Advanced level, even if maybe the aim is not to crack JEE Advanced perhaps, but you should still study at the JEE Advanced level because तुम्हें JEE Mains फिर बहुत easy लगेगा. Okay, this is a small thing that many students and many parents are not aware of. ओके सो ये हम पूरा ऐसे खत्म करेंगे एंड देन टेस्ट्स वगैरह भी होंगे, क्यूमुलेटिव टेस्ट्स भी होंगे. बेसिकली इफ यू फॉलो माय कोर्स कंसिस्टेंटली ऑन अ डेली बेसिस यू विल परफॉर्म एट योर फुल पोटेंशियल इन JEE Mains एंड JEE Advanced. बट कंसिस्टेंसी इज की, प्रोवाइडेड यू पुट इन द एफर्ट. एंड मेरी तरफ से तो मैं हमेशा रेडी हूँ तुमको हेल्प करने के लिए. बट यू हैव टू वॉच द लेक्चर, यू हैव टू आस्क योर डाउट्स. अच्छा, हाउ डू आई क्लियर डाउट्स? So let me just go to all the doubt clearance. यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए. आई एम ऑन माई 2026 बैच, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. तो ऐसे जैसे कि बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं मैंने एंड बहुत एफिशिएंट तरीका है डाउट क्लियरेंस का. तो जैसे कि मैं लेट मी जस्ट गो टू दिस. सो करंट एक्सरसाइज 2 में किसी ने डाउट पूछा था, कौशिक हैज आस्क्ड अ डाउट एंड व्हाट द वे टू आस्क अ डाउट इज, कहीं भी तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हें कुछ डाउट आया, जस्ट पॉज द वीडियो एट दैट इंस्टेंट एंड जस्ट टाइप इन योर डाउट हियर एंड देन क्लिक पोस्ट डिस्कशन. तो वो डाउट विल अपीयर ऑटोमेटिकली विद द टाइम स्टैम्प एंड देन आई नो एक्जैक्टली इन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर आस्किंग द डाउट और फिर मैं उसको रिप्लाई करूंगा. एंड इट ओपन्स अप अ थ्रेड, मतलब इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी. यू कैन इवन अटैच अ फाइल अगर तुमने कुछ सोल्यूशन खुद का किया एंड मे बी यू कम अप विद अ बेटर सोल्यूशन or maybe you are confused why your solution is wrong, so you can even attach a file and I'll check that. Okay, but it's like a proper conversation and I will make sure that your doubt is cleared. जैसे Kaushik has asked some doubt and then I reply and then he understands and इस तरीके से I ensure कि I won't stop. मतलब you can just reply back कि नहीं sir ये नहीं समझ में आया, it's fine. Okay, it's a conversation between you and me. Okay. So इस तरीके से I have cleared lots and lots of doubts. I think 10,000 plus doubts clear किए हैं मैंने over the last few years and I ensure कि हर student का हर doubt clear हो जाता है. For me it doesn't matter तुम्हारा doubt का level क्या है. It's a doubt. It's my duty to clear it. Okay. And if you don't believe कि because बहुत rarely ऐसा तुम्हें facility मिलेगा जहाँ पे teacher जो पढ़ा रहा है वही पूरा doubt clear कर रहा है in depth. So you can ask your seniors who have enrolled in my courses and they will confirm that I do clear 100% doubts. Okay, so इस तरीके से हम पूरा कोर्स स्ट्रक्चर करेंगे एंड इस कोर्स में गेम चेंजर शॉर्टकट्स आर आल्सो इंक्लूडेड. तो ये जो गेम चेंजर है दैट इज गेम चेंजर शॉर्टकट्स का जो सेक्शन है दैट इज बेसिकली आई हैव कम अप विद वेरी यूनिक मेथड्स. मोस्ट ऑफ देम आई हैव कम अप विद माई सेल्फ इन ऑर्डर फॉर यू टू सॉल्व JEE Advanced लेवल प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली. तो ये चीज़ें मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि न्यूटन्स लॉज में लेक्चर 4 के बाद मैं तुम्हें बोलूंगा वॉच द गेम चेंजर लेक्चर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 1 फाउंडेशन ऑफ द क्यूट मेथड. तो तुम्हें तभी बोलूंगा मैं कि तुम उस लेक्चर को देख लो. तो राइट एट द बिगिनिंग व्हेन यू आर स्टडीइंग द चैप्टर यू विल लर्न द क्यूट मेथड्स, यू विल बी एबल टू अप्लाई देम इन द होमवर्क
and you will be able to like just adopt it very naturally. मतलब जब तुम actual exam में आओगे, you will be able to solve JEE advanced problems very quickly using these elegant methods. Okay, बहुत सारे students discover my channel very late, they discover my website very late, and therefore they learn these cute methods at the very end after their syllabus is completed in their offline coaching वगैरह. तो तभी मतलब they have obviously they have lesser time to practice those methods, but you will be learning these methods right from the beginning. ठीक है ना? I will actually show you their applications, lectures वगैरह में I will show you their applications to actual JEE advanced PYQs, and you will really enjoy किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को एकदम एलिगेंटली सॉल्व करता हूँ. ओके, सो इस तरीके से हम पूरा कोर्स स्ट्रक्चर करेंगे, एंड द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू इज हार्ड वर्क. कंसिस्टेंटली देखा करो, कंसिस्टेंटली डाउट्स पूछो, कंसिस्टेंटली लेक्चर्स देखो, कंसिस्टेंटली होमवर्क सॉल्व करो. बाकी मतलब कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है. द होल प्रोसेस टू क्रैकिंग JEE एडवांस इज नॉट कॉम्प्लेक्स, इट्स सिंपल, बट इट मे नॉट बी ईजी. सिंपल है, मतलब प्रोसेस सिंपल है, इतना ही तुम्हें एवरीडे पे करना है, लेक्चर देखना है, होमवर्क सॉल्व करना है, डाउट्स पूछना है, यही चीज़ें करना है. बट इट्स नॉट easy to be consistent, otherwise everybody would have a lot of success. But the droppers who do have success are the ones who are consistent on a daily basis. So I will see you in my courses, and I will see you at the top.